हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग। तो हम आज पढ़ेंगे सीड, जो इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मैं एक एक वर्ड, एक एक लाइन को बताता हूँ आपको, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्या पार्ट इस बार नहीं आएगा, क्या पार्ट से क्वेश्चन आएगा, कौन से पार्ट से PYQ आया है, कौन से नहीं आया है। मैंने सब आपको बताया है और आगे भी ऐसे ही बताता रहूँगा। मैंने इससे जितने भी वीडियो पहले बनाई उसमें मैंने अभी तक नहीं बोला कि मुझे सब्सक्राइब करो, बट मैं अब बोल रहा हूँ दोस्तों कि मुझे सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को। और दोस्तों, अच्छे से फॉलो करो दोस्तों, सब कुछ बताऊँगा जिससे आपका नीट क्लियर हो जाए दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। सीड इन एंजियोस्पर्म, the seed is the final product of sexual reproduction. Often described it is often described as the fertilized ovules. ठीक है। Seeds are formed inside fruit. Seed कहाँ बनता है? Inside fruit. A seed typically consists of seed coat, cotyledons and an embryonal axis. ठीक है। The cotyledons of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve, as in leguminous. ठीक है। मैच्योर सीड्स जो हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। नॉन मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस। मैच्योर सीड्स हो सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म नहीं होगा एज इट, जैसे कि कम्प्लीटली कंज्यूम्ड होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पीस, ग्रोनट्स। ठीक है, पीस और ग्रोनट्स। एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म्स एज इट इज़ नॉट completely used up during embryo development, as wheat, maize, barley, kastur. Occasionally, in some seeds, such as black pepper and beet, remnants of nucleus is also persistent. This residual persistent nucleus is the perisperm. जैसे कि मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म आर प्लांट्स डेट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड बियर्स देयर सीड्स इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर और बियर करते हैं सीड्स को इन फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट चलते हैं। Integments of ovules harden as such protective seed coats. The micropyle remains as a small pore in seed coat. This facilitates entry of sperm and water into seeds during germinations. As seed matures, its water content is reduced and seeds becomes relatively dry. 10 to 50% moisture by mass. The general metabolic activity of the embryo slows down. The embryos may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen, and suitable temperature, they germinate. As ओव्यूज मैच्योर इनटू सीड्स, ओव्यूज मैच्योर करते हैं इनटू सीड्स में। दी ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स, डेट इज द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ओव्यूज इनटू सीड्स।
and ovary into fruits proceeds simultaneously. अब the walls of ovary develops into walls of fruit called pericarp. wall of ovary जो है वो डेवलप होती है wall of fruit से, उसको बोलते हैं pericarp. The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, ठीक है, etc. or may be dry as in groundnut and mustard, etc. Many fruits have evolved Many fruits have evolved mechanism for dispersals of seeds. Recall the classifications of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in an earlier class. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? In most plants, by the time the fruits develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. However, in few species such as apple, strawberry, cashew, etc. ये एम्स में क्वेश्चन आया है PYQ, ठीक है. In most plants, by the time the fruits develop from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. However, in a few species, apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to fruit formations. Such fruits are called fast fruits. Most fruits, however, such fruits are called fast fruits. Most fruits, however, develops only from the ovary and is called ट्रू फ्रूट्स. ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं डेवलप होते हैं ओवरी से और उनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स. Although in most of the species fruits are the result of fertilizations. फ्रूट क्या है? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. देयर इज अ फ्यू स्पीशीज. डायग्राम में आपको बताऊंगा. चलो बता ही देता हूँ पहले. ये है कॉटिलिडन्स, ठीक है. मैंगो के 2 कॉटिलिडन्स हैं. ये कौन सा है? माइक्रोपाइल है. सीड कोट, ये साइड में जो है सीड कोट है. ये क्या है? एंडोस्पर्म है. ये है कॉटिलिडन्स. हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, शूट अपेक्स, मेरिस्टेम, रूट टिप. ये कौन सी? रूट टिप. अब हम आगे चलते हैं. सीड कोट, ये कॉटिलिडन्स हैं. शूट अपिकल, मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस. और ये कौन सी है? रूट. एक मिनट में आपको कैसे बताऊँ. ठीक है. रूट, शूट एपिकल, मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, ठीक है. रूट टिप, ये कौन सी है? रूट टिप है. एंडोस्पर्म है ये वाली है एंडोस्पर्म, ठीक है. अब जैसे कि ये है पेरिस्पर्म, ये है एंडोस्पर्म. अब ये जो है ना, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं पता है? नीट में क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे यहाँ ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट लिख देंगे. यहाँ मैंने जैसे ये लेबल किया डी पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, मतलब ऐसे ही ए बी सी कुछ भी दे देंगे. और फिर हमें क्वेश्चन देंगे कि स्क्यूटेलम कौन सा है? ए है, बी है, सी है, ठीक है. हमने सी में करना है. इधर लिखेंगे एंडोस्पर्म, फिर लिखेंगे स्क्यूटेलम, फिर लिखेंगे रेडिकल. 3 ही अगर इन्होंने लिखा तो जैसे कि स्क्यूटेलम को हम बी करेंगे, एंडोस्पर्म को ए करेंगे, इसको सी करेंगे. हमने इधर लिखना है ए बी सी, ऐसे लिखना है कि कौन कौन से ये पार्ट हैं, ठीक है. मतलब ऐसे ही महजती कॉलम करेंगे. महजती कॉलम या कौन सी जगह पे क्या है. जैसे कि यहाँ कोलियोपेटाइल है, प्लेम्यूल्स है, रेडिकल्स है, कोलरेजा है. और सबसे इम्पोर्टेंट ये डायग्राम किसकी है? मेज़ की है, ठीक है. स्क्यूटिलम कहाँ पाया जाता है, ठीक है. कोलिराइजा कहाँ पाया जाता है. बस ये कुछ पूछेंगे, ठीक है. कोई मुश्किल नहीं है. तो जैसे कि ये है एप्पल, इसका जो अंदर का पार्ट है वो ये दिखा रहे हैं.
एनाटमी दिखा रहे हैं, थैलमस और ये क्या है, थैलमस थोड़ा बाहर सा पार्ट, बाहर वाला पार्ट, और ये क्या है, सीड, और ये एंडोस्पर्म मीजोकार्प। जैसे स्ट्रॉबेरी है, ये इसका पार्ट, ये थैलमस, ये एक्ने, ये साइड में होते हैं एक्ने पार्ट छोटे छोटे, उनको बोलते हैं एक्ने। अब हमने क्या पढ़ रहे थे, although in most of the species fruits are the result of fertilization, there are few species, कुछ species में ये बता रहे हैं कि in which fruits develops without fertilization, कुछ species में जो है fruits जो हैं वो develop हो रहे हैं without fertilizations, such fruits are called parthenocarpic fruits, जो without fertilization से हो रहे हैं उनको बोलेंगे parthenocarpic fruits। example क्या है, banana is an example, in one such example parthenocarpy can be induced through the applications of growth hormones and such fruits are seedless, और ऐसे फ्रूट्स क्या हैं, सीडलेस होते हैं, जैसे कि बनाना। सीड्स ऑफर several advantages to angiosperm, firstly since reproductive process such as pollinations and fertilizations independent of water are independent of water, seed formation is more dependable, seed formation is more dependable, also seeds have better adaptive strategies for dispersal of new habitats and helps the species to colonize in other areas as they have sufficient food reserve. Young seed have nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat, जो hard seed coat है ना, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शंस द यंग एम्ब्रियो, प्रोटेक्शन करता है यंग एम्ब्रियो को, ठीक है, ठीक है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, they generate new they generate new genetic combinations leading to variations. Seed is the basis of our agriculture. Dehydrations and dormancy of mature seed are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the years and also to rise crop in the next sessions. Imagine, can you imagine agriculture is the absence of seeds? No, or in the presence of seeds, yeah, which germinate straight away soon after formations and cannot be stored. How long does the seeds remains alive after they are dispersed? This periods again vary greatly in a few species. In a few species of seeds lose viables within a few months. Seeds of a large number of species live for several years. Some seeds can remain alive for hundreds of years. There are several records of very old yet viable seeds. The oldest is that of Lupinus arcticus, excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record 10,000 years of dormancy. A recent record of those are years old viable seed is date palm, phoenix, and dactylifera, discovered during the archaeological excavations at King Herod Place, जैसे कि इन्होंने प्लेस का मतलब गलत लिखा है, नियर द डेड सी। आफ्टर कंपीटिंग, जहाँ से ये है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा वहाँ से मैं थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा, ठीक है। अगर चांसेस फिर भी होंगे तो मैं वहाँ से बताऊंगा, वैसे मैं पूरा पढ़ूंगा। आफ्टर completing a brief account of sexual reproductions of flowering plants, it would be worth attempting of
comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following question: how many eggs are present in an embryo sac? How many embryos are present in an ovules? जितने एम्ब्रियोज होंगे उतने ही ओव्यूल्स होंगे, किसी किसी में होते हैं. हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, हाउ मेनी, ठीक है, टिपिकल फ्लावर्स, फ्लावर्स आर इन ए ट्री एंड सो ऑन. ये ऐसे. कैन यू थिंक of some plants in which fruits can vary large numbers of seeds? Orchid fruits are one such category and each fruits contain thousands of tiny seeds. ठीक है. Similarly, in the case of fruit of parasitic species such as Orobenec and Stigria, पता नहीं. Have you seen a tiny seed of fiscus? How large is the tree of fiscus? Develops from that tiny seeds. How many billions of seeds does each fiscus tree produce? Can you imagine any examples in which such a tiny structures can produce such a large biomass over the years? अब एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रेनी इस लेक्चर में हम करेंगे. एपोमिक्सिस जो है वो क्या है? एक टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल की नहीं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है. ठीक है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड को विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस करना. ठीक है. तो पॉली एम्ब्रियोनी में होते हैं मोर देन वन एम्ब्रियो, मल्टी एम्ब्रियोनी. ठीक है. ऑल दो सीड्स इन जनरस आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशंस. ठीक है. A few flowering plants such as some species of asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilizations called apomixis. What is fruit production without fertilizations called? Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस जो है ये फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिटिक सीड्स इन सम स्पीशीज. द डिप्लॉयड सेल्स एग इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिविजन्स एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशंस more often as in many citrus and mango varieties of some of the nuclear cells surrounding the embryo sac starts dividing, protrude into embryo and sac and develop into embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembrony. Take out some seeds of orange and squeeze them. Observe many embryos of different size and shapes, different each seed. Count the numbers of embryos in each seed. What genetic natures of apomitic embryo? What can you do? Clones. Hybrid varieties of servers of our food and vegetables crops are being extensively cultivated. Cultivations of hybrids are tremendously increase productivity. One of the problems of hybrid seeds have to be produced every year. If the seeds collected from hybrid are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. Productions of hybrid seeds is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmers. ठीक है. If these hybrids are made into apomitics, there is no segregation of characters in a hybrid progenies, and then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crops year after years, and he does not have to buy hybrid seeds even year. Because of the importance of apomixis in hybrid seeds industry, active research going on in many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis and transfer apomitic genes into hybrid varieties. समरी भी पढ़ाते हैं क्योंकि समरी में ये बात है कि जो बच्चे पूरी तरीके से मतलब लेक्चर को नहीं देखते
बट वो समरी से तो कुछ नहीं होगा, ये नीट है भाई, समरी से कुछ नहीं होगा। बट मेरे कहने का ये मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, मतलब दिमाग में कुछ चीज़ें पढ़ेंगी तो तब उसको चैप्टर का इंटरेस्ट आएगा। इसलिए समरी कोई नहीं कराता, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समरी में कराने में मज़ा आता है और कुछ बच्चे इंटरेस्टेड भी होते हैं। ठीक है। फ्लावर्स are the seat of sexual reproduction in angiosperm. In the flowers, endoecium consists of stamens represents male reproductive organs and gynoecium consisting pistils represent female reproductive organs. Atypically, anther is bilobdithecous and tetraspongiate. Pollen grains develops into the microspongia, four walls layers. The epidermis, endothecium, middle layers, and tapetum surrounded by the microspongium. Cells of the sporogenous tissues lying in the centers of the microspongium undergo meiosis, microsporogenesis to form tetrad of microspores. Individuals microspores matures into pollen grains. Pollen grains. Pollen grains represent male gametophytic generations. The pollen grains have two layered walls, the outer axon, inner intine. ठीक है, the axon is made up of sporopollins and has germ pores. Pollen grains may have two cells, a vegetative cells and a generative cells, or of three cells is vegetative cells and two male gametes or time of shielding. The pistils, three parts, stigma, style, and ovary. Ovules. Ovules are present in ovary. The ovules have a stalk called funicles, protective integuments, and opening called micropyles. The central tissue is in the nucleus, in which the archaeosporums differentiates. A cell of the archaeosporum of the mother cell divides meiotically, and one of the megaspore forms embryo sacs. The female gametophytes. The mature embryo sac has 7 cells, 8 nuclei at the micropylar end. The egg apparatus consisting of two synergids and egg cell at the chelazal and three antipodes. At the center is called central cells with two polar nuclei. Pollination is the mechanism of transfer of pollen grains from anther to stigma. Pollination agents are either abiotic, wind and water, ठीक है, और बायोटिक एनिमल्स होते हैं. Pollen pistil interaction involves all events from landing of pollen grains on the stigma until the pollen tube enter. तब तक जब तक pollen tube enter करेगी एम्ब्रियो सैक में, when the pollen is compactable or pollinations inhabitations, when the pollen is incompatible. Following compactable pollinations, pollen germinates on the stigma and result pollen tube grow through styles, enters the ovules, and finally discharges two male gametes in one of the synergids. Angiosperms exhibit double fertilization because two fusion events occur in each embryo sac, namely syngamy and triple fusions. The product of these fusions are diploid zygote and the triploid primary endosperm nucleus. In the primary endosperm cells, zygote develops into embryo, and the primary endosperm cells forms the endosperm tissue. Formations of endosperm always precedes development of embryo. The developing embryo passes through different stages such as pro-embryo, globular and heart shaped stages. वो मैं डायग्राम जो आपको पीछे बता के आया हूँ. बिफोर मैचुरेशंस, mature cotyledons, mature dicotyledons embryo has two cotyledons, has an embryonal axis with an epicotyle and hypocotyle. Embryos of monocotyledons have a single cotyledons. After fertilizations, ovary develops into fruits and fruits develops into ovules develops into seeds. Sorry, मैंने देखा नहीं seed. A phenomena called apomixis.
इस फिनोमिना को बोलते हैं इज फाउंड सम एंजियोस्पर्म पार्टिकुलर इन ग्रासेस इट इज दैट फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजर एपोमिटिक्स हैव सर्वस एडवांटेजेस in horticulture and agriculture. Some species produce more than the embryo in their seed. The phenomenon is called polyembryony. अब ये एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चन वगैरह हैं, ये 12th के बच्चे करेंगे, हम यहीं तक करेंगे जो हमने कर लिया अभी।